Assalamu alaikum, hello. Thank you for watching my channel. I hope you guys are doing good. Today is our second day in Baku and I'm going to explore the city today. Tomorrow I'm planning to go to Shahdag, and then day after tomorrow might be, you know, close by attractions, and then the last day we're gonna go to the other place. I think it's called Shahdag, and Gabala is the last day. So because those are the 4 drives, so I hope you guys are enjoying my videos. So stay tuned, and I'm gonna be leaving shortly to the main tower. From there we're gonna go and explore the rest of the Baku attraction. This is the view from my hotel in the morning. It's around 8 o'clock in the morning right now. So see you guys shortly. There is this place for movies, you know, the meaning, for example, in Africa, in Asia, recording in here, in these places. This is. So these are the oldest streets also? Yeah, not in this, actually in this street, but it's all of the places. Maybe from here, from there. Yeah. It matter, it depends what's the film, what's the movie, you know? ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको यहाँ वाइन्स वगैरह ये वो सब जगह ऐसे यहाँ मिलती है. मुझे अभी तक कोई मॉस तो नज़र नहीं आई है इनके यहाँ कोई ऐसे जैसे कोई बनी हुई होती है. हम लोग मेडन टावर की तरफ. Firstly, this is built in 4th-6th century. You know, before Islam coming to Azerbaijan. Okay. In Azerbaijan we have the Zoroastrianism. You know what is it? You've been from Iranian, yeah. Yeah. Iran, This from is- Persian, yes, yeah. Yeah, motherland is Iran. Yeah. So the first part was built in 4th-6th century. After continuing, if I'm not mistaken, 12th or 13th century. Okay. So you know, this is like an iceberg. This is, we can see this part of on the ground. And also we have the underground approximately 15 meters, if I'm not mistaken, 14 meters. So, and we have again the what I'm saying before, Shah government. But what is the history of that one? What is it like? Why did they make it? Who make that? This is, you know, the into 12th, 11th century, Caspian Sea located in here. Okay. And now it's gone. But there is some story that there is some king. They have a daughter lives here. Yeah. What is that story? I'm coming to here. Okay. You know, this is. Anushka, listen to that one. The Shirvan Shah is the building, continue building. This is built. So after we have legend, why is made in tower? In translate Azerbaijan, this is Gizgalası, the castle of girl, daughter, meaning, you know. So the king Shah want the daughter of king love this other boy. So the king gave to the another boy, you know. And she's not agree with his father, going to up and jump it from there. Yeah, from here and fall. So who was the king? What's the name of the king? King, if I'm not mistaken. So it's you know, this legend. It's not especially the one the king. Okay. It's maybe a legend. It's true, false. We don't know. You know, we call it the Maiden Tower. There was been the Caspian Sea, and this is was been the, you know, this is Guat Tower. Yeah. In history, what? तो इसकी हिस्ट्री है कि बादशाह की बेटी थी कोई, तो किसी को पसंद करते थे बादशाह, उनकी शादी नहीं करना चाहते थे इनके थे कोई किंग, तो उन्होंने ऊपर से जाके उसकी बेटी ने
यहाँ से सुसाइड कर लिया था। ये उसका उस पर बनाया है, कहते हैं इसके आई डोंट नो कितने ट्रू है। ये मेरिन टावर है, ये पर्शियन टाइप का, जोरिस्टियन टाइम का ना, लोग इधर रहते थे, इनका ओल्ड बना हुआ है और यहाँ फिर उनको ग्रेव्स है। So what do they call to this thing? Is it like just what is that? What's this? This is hammam. This is hammam, eh? Yeah, hammam. Okay. Hammam, And that's really old, eh? Bathroom. Yes, it's 3 or 4 mini towers. Okay. Yes. Open air museum, that's what they call it. Yeah. No, when the woman. ये open air museum उनका. The meaning is staying over the grave, and meaning when he live, what's the making? The making making sheep, making cow. So जब लोग इनके जोरिस्टियन के मरते थे तो जब कब्र बनाते थे उसके ऊपर ये साइन बना के रख दिया करते थे किस किस्म का बंदा है ना, ये साइंस होते थे इनके। देखो ये तो कब्रें बनी है, उसके ऊपर आप देखेंगे साइंस बना के, स्टैचूज बना के रखे हैं। So I make myself clear कि थोड़ा सा ये जो हैं ये ग्रेव्स नहीं है, ये इस एरिया में ये सारे ओल्ड एंशिएंट बने ग्रेव्स के साथ ये जो ऊपर रखा करते थे स्टोन, और ये लोग ऐसे बना के स्टैचूज रखा करते थे, वो हैं ये जो मिले हैं। तो ये वो एरिया है ओपन एयर म्यूजियम। So these are 18th 19th century buildings, eh? Yeah. Maybe before. And it's Russian time, eh? No, Russian Empire. Yes, we was under occupation Russian Empire. Okay. Yeah. But not all. So now we are going to Shirvan Shah Palace, eh? Yes, Shirvan Shah Palace. And that's in same old town as well. Yes. This is house of Shah. House of Shah. Okay. Yeah. Oh, you said Palace of Shah, eh? Yeah, Palace Shah. So this is called Shamakhi Gate, eh? Yes. Because from here we're going to the Shamakhi. It's very close to Shamakhi. We can turn to left. A popular spot for, pictures. ये लोगों ने बनाया हुआ इधर ओल्ड टाउन के अंदर। Meaning shoes is going there. Hands. This is a house or like? No, workplace for painters. ये actually इनका one of the painter है, उसका घर है. So it's the house of the painter, eh? Workplace. The workplace of the painter. तो उसने बाहर अपना काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ, आप देख सकते हैं इसको ना, ये सारा उसी का आर्ट है। Do you know the name of the painter? Like? I forgot. I know it, but I forgot. It's a modern painter. इधर के जो है इन्होंने इसको पेंट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ये भी काफी ओल्ड ट्री है। ये हम शिवान शाह पैलेस पहुंच चुके हैं। ये हमारे ओल्ड टाउन में हमारे होटल से 5 मिनट की वॉक पे था, थोड़ा ऊपर जाके। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं ट्विन टावर है, एंड दैट व्हाट इज इट कॉल्ड दिस टावर? टीवी टावर एंड स्लिम टावर्स। दिस इज टीवी टावर है, ये जो है ये टीवी टावर है इस तरफ, और ये ट्विन टावर्स हैं। तो ये टीवी टावर, स्लिम टावर्स। ये इनके पोएट हैं अलीगा वाहिद ना, जो इनके नेशनल पोएट हैं। ये उनका मोनूमेंट है इधर ओल्ड टाउन में, यहाँ लोग आते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। About his poems, about what he wrote, you know. So whatever it is, okay. Yeah. It's a mosque or what, right? Kila.
ये शिवंशा पैलेस का किला है। हम जब अंदर आए यहाँ पर पर्सन इंटरेस्ट 15 मनात है इधर पर पर्सन की, और अगर चाइल्ड आपके साथ तो उसकी 6 मना। अच्छा है किला, हम तो पाने के लिए का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सब गुड बिल्कुल सिटी के ऊपर की तरफ है ओल्ड टाउन। So Sultan Ibrahim, those are like Persian kings, eh? Yeah. This is Ibrahim Shah. Ibrahim Shah. this is one Shah Sultan Ibrahim. Sultan. After Shah Khalilullah, Caliph Harun Yasar. Now Shah Khalilullah from family. Shah mosque, meeting room, hammam. Yes. ये देखो ऐसा This is from Persia. made in Tower. Where made it tower? Yeah. This is old city Gala. Before big water. Before old city made in Tower. After inside water 5 meters down. 1 meter here. Oh. So now it's all gone. Water Yes, just yes. pushed here. Earthquake. Earthquake भी आया यहाँ पे. This one is Shah for lady libas. Shah for lady libas. Shah libas. For lady libas, main libas. For this music is before room service family. Shah. Yeah. Service family. Oh, beautiful. This is name Majmai material silver fruit. Food, yeah. Nice museum. 15th century. Yeah, 15th century. Oh. Before Shamakhal, this is name Shirvan. Before Shamakhal, Shirvan. Two big problems there. This is Persian body. You see? Today is Anusha is vlogging with me, huh? It's very rare Anusha participate, but today This is she's... my cat.
ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे जो इनके इसमें म्यूजिक करते थे, ये लोग बनाते थे। सब ये पौने 15th-16th सेंचुरी के हैं। इनके हैंडमेड सोप्स हैं इनके। ये मुझे अच्छा लगा, ये मैं लूँगा वापसी में अपने ले जाने के लिए, सुवेनियर अच्छा है। ये देखिए इसमें इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे लगे। For season hotel, territorial होटल में old city, no, before Afghanistan, 15 years. ये हमाम है और मॉस्क है इधर ना अंदर इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा है बहुत ना, बहुत अच्छा है। अब हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे, यहाँ से बस फिनिश कर रहे हैं। Name of the painter name is Ali, you know. The same name as like mine. My name is Ali too, you know. Yeah, the same. पोएट है निज़ामी, जो अज़रबैजान का, ये उनका स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। ये इनका पोएट म्यूजियम है पूरा। मेरे पीछे देख सकते हैं इनका मेन, और ये इनका पोएट म्यूजियम है मेरे पीछे पूरा। हम लोग अब दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको फिर दिखा